So hello everyone, welcome back to the channel with the new video, new openings and new hopes. Guys, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा दूसरे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। आज आपके लिए लगभग 7 से 8 ओपनिंग मैंने लेके आया हूँ, जो भी फ्रेशर्स एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जावा डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बाकी सारी चीज़ें की ओपनिंग्स आज मैं बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड ऑन वीडियो। और आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस नीडी वीडियो टू द नीडी पीपल। ओके, or do not skip the video because last 3 to 4 openings are most important and it's related to the Maharashtra openings and Pune and Mumbai locations. So let's start with the company name, their eligibility criteria and application procedure. So the first company, they are hiring for the software test engineer, and the company name is Qualitrix Technologies. They are hiring for the manual testers, and experience they are expecting 2 to 3 years, and job location will be the Bangalore, and they preferred immediate joiner, and those are interested for this position and fulfill this eligibility criteria, they can share their profiles on this email id. Okay, the mail id you can see over here. This is the correct and proper email id. Do check the spelling later by later. Okay, so the next company name is LNT Mry. So you आपको पता होगा कि LNT और Mindtree का टाइप हो चुका है. So the name is LNT Mindtree. So they are having a mega drive in Kolkata on upcoming of Saturday. One means 24th of May 2025. The location will be Kolkata and time will be 9 to 12 PM. स्किल सेट्स आपको क्या लगेगा यहाँ पे, किसकी किसकी हायरिंग हो रही है? मैनुअल प्लस ऑटोमेशन एक्सपीरियंस 5 to 10 years of experience, manual plus automation, manual plus Java with Selenium experience 5 to 10 years. डेटा ATL टेस्टिंग का भी ओपनिंग्स है 5 to 10 years. वर्कशॉप 5 to 10 years. ये सारी हाई स्किल्स और हाई पेइंग जॉब्स है. दोज आर इंटरेस्टेड फॉर दिस पोजिशंस एंड फुलफिल दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ये आप एक बार पढ़ लो कौन से ओपनिंग्स आपके रिलेटेड जो भी है वहाँ पे आप रिज्यूमे भेज सकते हो. ठीक है, उसके लिए आपको स्क्रीनिंग राउंड की जरूरत पड़ेगी. स्क्रीनिंग राउंड के लिए आपको रिज्यूमे इस ईमेल आईडी पे भेजना पड़ेगा. ठीक है, ये 2 मेल आईडीज मैंने दी है, वो 2 मेल आईडीज पे so you can share your resumes. Okay, so let's move on the third company. So the third company name is Apollo Technologies. They are hiring for a QA manual tester. Okay, role is manual tester. Okay, so experience 2 to 5 years. Job location will be Noida, and required skill sets is, this is the important and mandatory skill sets. Those are having this manual testing, mobile testing and web application. They can share their profile on this email address. So I'm just pasting the email address here. So nikki consult@apple.com. Sorry, .net. So you just check the spelling later by later and take a screenshot and apply uh, with this position. And make sure for all openings you should mention the particular position in name in the subject line while you sending the resume to the recruiter or particular email address. So before moving to the next company, guys, I would like to tell you, so for software testers and IT related openings are going to be boom, means it's going to be improved, but you need a ATS compliances resume first. You most of candidates aware about the ATS software. ATS software क्या है, कैसे काम करता है, एक मिनट के मैं बताता हूँ आपको. रिक्रूटर आपके नौकरी प्रोफाइल या लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाने की जरूरत नहीं. एज अ कीवर्ड्स वो जस्ट सर्च करेंगे, और जो भी कीवर्ड्स उनके रिज्यूमे में हैं, कीवर्ड्स किस स्किल सेक्शन में है आपके ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के किस स्किल सेक्शन में अगर रहेंगे, वो ATS कंप्लायंसेस कीवर्ड्स के हिसाब से आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होके HR के पास डायरेक्ट जाता है, ना कि आपको उनके प्रोफाइल पे जाने की जरूरत पड़ती है. वो मैन्युअली सर्च करना पड़ता है, वो सर्च नहीं करते अभी HR. वो ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो सर्च करते हैं उससे. इसके लिए आपका रिज्यूमे ATS कंप्लायंसेस होना चाहिए. अगर आपको those who want to create their ATS friendly resume, they can reach me out. Definitely I will help you out, and make sure this is the paid resume building service. Those are interested for paid resume building service, so they can reach me on this WhatsApp number. I'm just pasting WhatsApp number here. So 9028919849 is my WhatsApp number, so they can reach me for resume building services. और अपने बहुत सारी कैंडिडेट्स
प्लेस हुए उसका हाइलाइट्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाला है, तो इसको इंस्टाग्राम पे आप पहले चेक कर सकते हो, उसके बाद ट्रस्ट आने के बाद मुझे इस नंबर पे पिंग कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कंपनी. द नेक्स्ट कंपनी नेम इज Sparks IT Technologies. They are hiring for software engineers. So they are hiring for manual and automation test engine for both the positions. So a strong understanding of SDLC, STLC. This is the basic concept of software testing. You guys aware about it. So bug tracking tool Jira or any similar bug tracking tool, it's fine, because bug tracking tool will change एज पर द कंपनी. ओके, कंपनी के हिसाब से वो कोई बग जीला रखता है, कोई जीरा रखता है. सो इट्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी, बट जीरा इज द मोस्ट पॉपुलर टूल, सो यू should aware about this for this position. Okay, so excellent communication and collaboration skills they are expecting, and those are interested for this position, they can share their updated profile on this mentioned email address. Okay, just go and apply. अगर कोई बाकी हेल्प चाहिए रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए और डेली जॉब अपडेट्स के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, और डेली अपडेट्स का फ्री में डेली अपडेट्स आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. सो यू कैन ज्वाइन दिस. ओके, बिफोर वाइंड अप दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जस्ट subscribe our YouTube channel and share this with the needy people, those are searching a job for IT industry. Okay, the next company name will be the Sigma. They are hiring for the quality assurance engineer, and this will be the 8 years of experience candidates. So this will be the night shift only. The job location for this position is Ahmedabad, and those are interested for this position, they can share their profile on this mentioned email address. Okay, just go and apply, and make sure this is the position name you should mention in the subject line while you sending the resume to the recruiter. Okay, this is my WhatsApp number. Those who want to build their resume from me, so they can reach me on this WhatsApp number. So, okay, so that's it in this video. So see you in the next video with the new openings and many more. Thank you so much for watching the video. Stay tuned. Thank you so much.